Realme has launched its 10 series with the addition of two new devices, Realme 10 Pro and Realme 10 Pro Plus. Today we are going to review Realme 10 Pro Plus. The phone packs a lot for its price. The front of the box it's written Realme 10 Pro Plus and there are some more branding of its name on the right and left side. Out of the box we have a SIM injector, some guide papers and silicone cover of the device. On the second layer we can see the device and then a Type-C to Type-A charging cable and 67-watt fast charging adapter. Let's start the Realme 10 Pro Plus review with its design and build quality. The phone looks pretty good at the first look. We have the Starlight color option with us for the review. Realme 10 Pro is equipped with a 5000 mAh battery and supports 67-watt smart flash charging. According to the official statement, it can charge from 1 to 50% in only 17 minutes and to 100% in 47 minutes. And the device comes with very lightweight, only 177 grams. One of the best features of this device is a big 6.7 inches AMOLED curved display. It supports 1.07 billion color display and it supports a maximum refresh rate of 120 Hz. You get powerful performance from the MediaTek Dimensity 1080 chipset, which is paired with up to 12 GB of RAM. With all these features, definitely you will enjoy watching a movie on it. Realme 10 Pro Plus comes with a triple camera setup. On the rear side, this includes a 108 megapixel primary camera accompanied by 8 megapixel ultra wide angle camera and 2 megapixel depth camera. The main camera setting has significant characteristics like digital zoom, autofocus, HDR mode, touch to focus, etc. In the camera setting, we have many options such as night mode, street, video, photo, portrait and a 108 megapixel photo camera lens and have more. In the more we have many options. Now it's time to take some samples, but I took some samples in Urdu. I hope you can understand the quality of the video and pictures. इसके अंदर ऑप्शन नहीं है फ्रंट कैमरा से जब आप वीडियो बनाते हैं तो अंदर की तरफ जो है कुछ इस तरह से इसका जो है कलर्स का रिजल्ट मिल जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा है। फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा पे अगर करते हैं तो बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी है और मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूँ तो पीछे की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने वाइट कर दिया है, इसने बहुत ज़्यादा, तो पीछे का कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर मैं अपने दूसरे फ़ोन से करूँ तो पीछे का काफ़ी थोड़ा सा दिखाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसने वाइट कर दिया है। अंदर की तरफ जो है घर की तरफ जो है बेहतर मुझे लग रहा है, तो आवाज़ भी आपको ठीक सुनाई दे रही होगी मेरी, आई गेस। ये फ्रंट कैमरा की वीडियो थी, उसके बाद थी ये बैक कैमरा की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बैक कैमरा से। फ्रेम रेट जो है 30 है। मियो जो है अभी खाना खा रही है अपना और मैं अभी अपने घर में हूँ। ये 25th फ्लोर पे है तो ऊपर से जो है पूरा दिखाई देगा
तो अगर मैं इसे ये पीछे की तरफ नहीं होगा अभी, तो ये अभी जूम होगा और ये मजीद जूम होगा। तो कुछ बाइक्स दिखाई दे रही हैं और ये आपको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट कर रहा है ये बिल्कुल आखिरी में जाके। और वीडियो जब आप 4K की बनाएंगे तो ये अल्ट्रा वाइड नहीं करेगा। अल्ट्रा वाइड पहले आपको इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये अल्ट्रा की वीडियो बनाएगा, उसके बाद जूम करेगा। तो ये अभी जो है बैक कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह इस तरह से आप कर सकते हैं। आवाज़ वगैरह अगर ठीक सुनाई दे रही है आपको, इसका मतलब है कि ठीक है अभी मैं घर में हूँ और शोर वगैरह ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं अभी आपको इस तरह से दिखाऊँ तो अभी मुझे पता नहीं है कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, वाइट कर दिया है या जैसा होना चाहिए वैसे ही है कि आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं। तो इसका जो है ये बैक कैमरा से रिजल्ट है 4K की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। Realme 10 Pro price starts at $220 to $270. Comes with 3 variants and 3 colors. I wish you like my videos and hope you consider to subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching and I will see you in the next one. Bye.